Hi guys, welcome back to my channel. This is Chakriti and you are watching Jay's Lifestyle. So in today's video, जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा, I'm going to review the crash course by EduCaptain. So I'm currently in August batch that I joined in the end of the December. It is their first batch. So I will try to tell you everything about their crash course, or I will also tell about my experience. So let's start. So मैंने पूरे पॉइंट्स लिखे हैं, मैं कुछ भूल ना जाऊँ. तो let's talk about the faculties that they provide you for different sections. So for higher maths they provide you, हमें higher maths अंकित कुमार सर पढ़ाएंगे. उसके बाद वर्बल हमें भूपेंद्र सर पढ़ाते हैं. सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, एकदम ज़ीरो से स्टार्ट करके आपके बेसिक्स क्लियर करते करते चलते हैं, आपको एडवांस लेवल तक ले जाते हैं. देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग आपको संदीप सर पढ़ाएंगे. मतलब हमें संदीप सर पढ़ाते हैं और सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं. So let's talk about the things that they provide you in their course. So first is detailed video lectures. आपको हर सब्जेक्ट के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसके क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं. So the second thing is books, handwritten books. They provide you handwritten books of logical reasoning, quantitative aptitude, verbal ability and general awareness. And one book that you should also purchase for vocabulary is क्या नाम था, नॉर्मन लुइस की जो बुक है वही, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस. So first video lecture, second books, and they also provide you IP math specific book जो कि आपको PDF फॉर्म में मिलती है. And next thing is online mocks. So they provide you online mocks, topic wise and full length mocks. Next is doubt solving faculties on Telegram groups. They make different Telegram channels for different subjects और वहाँ पे डाउट सॉल्विंग फैकल्टीज होती है. वो आपके आपके मतलब जो भी आपको डाउट्स है आप उनसे पूछ सकते हैं एंड दे विल रिप्लाई यू 100%. दे विल रिप्लाई. हेयर कम्स दी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, दैट इज़ मेंटरशिप स्ट्रीम्स. सो हमारी हर सैटरडे संडे मेंटरशिप स्ट्रीम्स होती है विद प्रिंस भैया, और जितने भी क्वेरीज होती है हम उनसे पूछते हैं एंड यूज टू रिप्लाई अस, लाइक हाउ टू मैनेज बोर्ड्स एंड एंट्रेंस साथ में. तो वो बहुत सारे सोल्यूशन और मेथड्स प्रोवाइड करते हैं, और जितनी भी गाइडेंस आपको चाहिए एंट्रेंस और बोर्ड्स प्रिपरेशन से रिलेटेड, ही यूज टू प्रोवाइड अस दैट इन अ वेरी गुड मैनर्स. और जितने भी मेथड्स वो बताते हैं वो बहुत यूज़फुल होते हैं. एंड ही यूज टू टोल अस सो मैनी इंस्पायरिंग स्टोरीज ऑफ हीज कॉलेज लाइफ जो हमें बहुत इंस्पायर करती है. एंड आप पूरी बैटरी आपकी चार्ज हो जाती है. तो मतलब ही इंस्पायर्स अस सो मच. सो द नेक्स्ट इज इंटरव्यू प्रिपरेशन. अगर आप एंट्रेंस क्लियर कर लेते हो देन द नेक्स्ट थिंग जो आएगी आपके रास्ते में वो है इंटरव्यूज़. तो ये आपको उसके लिए भी प्रिपेयर करते हैं. सो दैट्स इट, आई गेस इतने पॉइंट्स हैं, और वो तो थोड़े क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स मुझे करने हैं. There are a few questions that you guys asked me in my previous video. तो अगर आपने मेरी previous video नहीं देखी है, that was about books review, these same books. So आप वो watch कर सकते हो after watching this video. So let's talk about the fees of this course, that is 8,000 rupees. And if you ask me, is EduCaptain worth it? Of course, yes. It's a very good course, to be honest. Ouch. So let's come on the questions that you asked me in the last video. So the question number 1 is that, is there any other batch coming of EduCaptain? So the answer is yes. You can check out their channel. उन्होंने अभी मतलब जब उनका क्राइस्ट का वीडियो आया था उसमें उन्होंने बोला था कि एक कोर्स आने वाला है, तो आप डेफिनेटली उनका चैनल चेकआउट कर सकते हैं. एंड देन so the next question is best time to start preparation for BBA entrances.
राइट नाउ आई एम इन 11th. सो एज सच कोई टाइम नहीं है कि मतलब हाँ अभी स्टार्ट करने से होगा. आप 11th में भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 12th में भी स्टार्ट कर सकते हो. अगर या there is one thing that if you are targeting IIM Rohtak or IIM Indore or any IIM, और अगर आपकी मैथ्स वीक है या फिर आप नॉन मैथ स्टूडेंट हो तो इट विल बी बेटर कि आप अगर आप 11th से स्टार्ट करते हो तो फ्रॉम देयर यू कैन give 1 or 2 hours to your preparation. That will be more than enough. So yeah, so that's it for this video guys, and holding on to what I know, to everything I've learned, but it's real and fabricated.